Welcome again to the new video for Global English Academy. My name is NKC Nair. Because I was traveling, I didn't get much time to upload videos for a few days. So sorry about it. And I'm here with a video today. I'll just make sure that I'll continue uploading the videos every day or alternate days. So, hope you could understand the last classes. Today, we are going to talk about how to use comparisons. So, practice it the way I said. I suggested you keep on practicing, and I'll just come with more and more videos about how to improve your communication skills and how to enhance your vocabulary abundance and all. Every aspects, I'm going to bring new videos. So today I'm going to just cut short the video to 15 minutes because seemingly people don't have much time to just watch this video, long videos. So I'm just making it a little bit short today. So we are going to talk about how to use comparisons. When you compare something, ये उससे अच्छा है, he is better than him, he is the best. These are what we call the comparisons. Positive degree, comparative degree, and superlative degree is what we call it in English. If just suppose good positive degree is what we call it, and better is the comparative degree. And when you have two or more things or persons to compare, you use this comparative degree. Better, he is good, and if you have two people, he is better than him, is where we use comparisons. And the best is superlative, nothing beyond it. So we call he is the best in all your students. So that is called, so positive degree, comparative degree, superlative degree. Good, better, best, smart, smarter, smartest. Ramesh is a good boy. It's a general statement. एक boy मतलब एक लड़का अच्छा है तो उसको हम कहते हैं he is good. Okay, this is a general statement. That is positive. Positive degree is what we call. Good is what we used here. And suppose we have two boys. There also, to make a statement, general statement, Ramesh and Praful are good. We can say it's positive degree. They are good. Okay, two people are there, two persons are there. Or Ramesh and Praful are good boys. We can call. When one more person is there, and uh, we just compare these three with others, one is going to be better than others. Okay, so Praful is, इसमें से तीनों में से एक बच्चा दूसरों से अच्छा है. कैसे बोलेंगे? प्रफुल्ल इज बेटर देन रमेश एंड Ramesh in studies. We are comparing two people. Praful is the better. Praful is better than Ramesh in studies. पढ़ाई में प्रफुल्ल अच्छा है उससे, रमेश से. It's comparative. No, we can call what do you call comparisons. Praful is better than Ramesh in studies. That's the easiest way to just compare. Comparative degree, superlative degree. And when it goes to the extreme level, the best. Peter, the third person comes. Peter is the better student in the whole school. He's the best. He's the best student in the school or in all students. Peter is the best. What do you call it? You can just create a sentence. Don't go after logic and reasoning. Whichever sentence you think is correct, you can use it. But make sure that the grammatic mistakes don't come there.
Peter is the best in their school. Best, the best. When you use superlative degree, always try to use the best, the smartest. Peter is the best in all students. सारे छात्रों में पीटर सबसे अच्छा है. सुपरलेटिव डिग्री से आगे कुछ नहीं है. कंपैरेटिव डिग्री में दो से ज्यादा कोई आते तभी हम कंपेयर कर सकते हैं. एक आदमी को तो कंपेयर कर ही नहीं सकता. टू और मोर पीपल आर देयर और टू और मोर things are there, we can compare. This is better than the other one. And if you just go to the shop also, we just compare. This is better. Leave it. This is good. But this is better. And the third one is the best. So we'll just go after the best if the pocket permits. Big, bigger, biggest. Big means बड़ा. Bigger उससे थोड़ा बड़ा. Biggest सबसे बड़ा. That's the easiest way. Big बड़ा है. Bigger उससे थोड़ा बड़ा. और ये दोनों में से बड़ा. और the biggest सबसे बड़ा. That is called comparisons. Tall, taller, tallest. Tall लंबा. Taller और थोड़ा लंबा. और the tallest सबसे लंबा. That's the way we use the comparisons. He is tall. One boy is tall. He is tall. Ramesh is tall. And when we talk about Praful is taller than Ramesh. Praful is taller than Ramesh. इसका मतलब है उससे थोड़ा लंबाई में थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा लंबू है. और Peter is the tallest in 3. The tallest. Superlative degree. सबसे tall Peter है. This is called comparisons. कुतुब मीनार is a tall monument. Yes, सब जानते हैं कुतुब मीनार पुराना मोन्यूमेंट है लेकिन बहुत ऊंचा है. कुतुब मीनार is a tall monument. Eiffel Tower is a taller, what are you call tower, whatever you call construction, that's up to you. Whichever you think is right, you can use. No logic and reasoning because we are just creating sentences. Eiffel Tower is the taller one. Eiffel Tower से थोड़ा ऊंचा है. ये दोनों में से comparison comes from the when you have two or more things or two or more persons, we can use comparisons, comparative degree there. बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट है आज का टाइम में. पहले क्या होता था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये सब बड़ा होता था. और ये ईफल बुर्ज खलीफा आने के बाद में ये सबसे टॉलेस्ट मानने लगा और जानने लगा. ओके, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है. खलीफा के एच भी है इसमें शायद. बुर्ज खलीफा. So comparison, again I'm telling you, when you have two or more persons or things, दो से ज्यादा कोई आदमी हो, इंसान हो या और कोई चीज, you can use comparisons. कंपेयर कर सकते हैं. इससे अच्छा वही है, इससे कलरफुल वही है और दूसरा ज्यादा कलरफुल है और दूसरा थोड़ा टॉलर है, लंबा है और या जो भी है. Comparison can be done when we have two or more objects or persons. And superlative degree when we are using the top one, because इससे आगे कुछ नहीं है. Superlative degree से आगे कुछ नहीं है. That is ultimate thing. उससे बढ़कर कुछ नहीं है. सबसे बढ़कर वही है. That is called superlative degree. Burj Khalifa is the, yes, KH is there. Burj Khalifa is the tallest building in the world.
दुनिया में सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा माना जाता है। So this is how we use comparisons and positive degree, comparative degree and superlative degree. For that you'll have to just create a chart. वो चार्ट बना के रखे क्योंकि वो वर्ड्स पढ़े एक दिन में पूरा उसका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का चार्ट इसमें डाल दूंगा, नोट कर लीजिएगा और थोड़ा पढ़ना चाहिए बट व्हेन यू गेट अ चांस टू डू इट यू हैव टू डू इट। कंपैरिजन ही पता नहीं है तो कैसे करोगे, इसलिए you have to learn all this every time। I'll just come up with the different videos and जो पहले जो कई दिन चलता है क्योंकि I want just you to be sure about how to create sentences। सेंटेंस क्रिएशन में कोई डाउट है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और कोई ऑनलाइन क्लास में अटेंड करना चाहते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ाता है क्योंकि उतना टाइम यहाँ नहीं मिलता है। और व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकता है, बड़ा ज़्यादा इतना फीस भी नहीं है, फीस बहुत मिनिमम फीस ही है। एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। अपना फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर देना जो जो इंग्लिश में थोड़ा वोकैबुलरी बढ़ाना चाहता है, स्किल्स डेवलप करना चाहता है, उनको भी बोलते हैं और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और जो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ना चाहता है दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो डायरेक्टली। सो चीपेस्ट अगले है। सो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ऑल वेजिटेबल्स इन संडे मार्केट इज चीप, क्योंकि हर मेट्रो सिटीज में या मेगा सिटीज में जो भी है सिटीज में मार्केट्स लगते हैं वैसे, कभी फ्राइडे मार्केट, कभी संडे मार्केट, कभी तो ट्यूसडे मार्केट, कभी थर्सडे मार्केट। Some try to just say here all vegetables in Sunday market is cheap, थोड़ा सस्ता मिलता है। जैसे हम इतना बड़ा मार्केट में जाए, वेजिटेबल मार्केट में जाए, संडे मार्केट में जाए तो दुकान में जो वेजिटेबल्स मिलता है उससे कई गुना कई कम में मिलता है, वहाँ पे दाम थोड़ा कम में मिलता है। यू कैन चॉइस ऑल्सो देयर, बट इन द Tuesday market vegetables are cheaper। Comparison comes there। Okay, comparative degree, when you have two markets you can compare it, or two or more are also there you can compare। and the ultimate thing, इससे आगे कुछ, इससे बढ़कर कुछ नहीं है, the superlative degree। and in Friday market they are the cheapest। फ्राइडे मार्केट में जो है सबसे चीपेस्ट मिलता है, उससे तो कम कोई दे ही नहीं सकता। सुपरलेटिव डिग्री वहां पे यूज होता है। एंड इन फ्राइडे मार्केट दे आर द चीपेस्ट। अब समझ गए होंगे कैसे हाउ टू यूज कंपैरिजंस। व्हेन यू हैव टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स यू कैन कंपेयर इट विद द अदर। अच्छा हो, बुरा हो, टॉलर हो, चीपर हो, जो भी है यूज कर सकते हैं। दैट इज वी कॉल कंपैरिजंस। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कॉस्टली, कॉस्टलियर, costliest। When you use superlative degree, the use the or prefix the with the superlative degree, the costliest, the cheapest, the tallest। costly, costlier, costliest। costly महंगा, उससे महंगा, और सबसे महंगा कॉस्टलीस्ट। सबसे सुपरलेटिव डिग्री, उससे महंगा है the costlier, super comparative। and positive degree costly, general statement is costly there। costly, costlier, costliest, positive degree, comparative degree and superlative degree। इन गफ्फार मार्केट, एक मार्केट होता है कलकत्ता में, दिल्ली में गई है, मैं सुना हूँ गफ्फार मार्केट। गुड्स आर कॉस्टली
एक्चुअली इम्पोर्टेड गुड्स होता है, जैसे हमारा कोणार्क प्लेस का जो अंडरग्राउंड मार्केट है इसका जैसा फार्म मार्केट भी है, इम्पोर्टेड चीज़ें मिलते हैं वहाँ पे, उसमें थोड़ा कॉस्टली होता है. इनका फार्म मार्केट गुड्स आर कॉस्टली, जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव डिग्री. एंड इन लुलु मॉल दे आर कॉस्टलियर, उससे थोड़ा आगे है, उससे थोड़ा ज़्यादा है. लुलु मॉल में थोड़ा सा और ज़्यादा है, सुपर कंपैरेटिव डिग्री कॉस्टलियर. एंड in bigger 5-star market if you go, naturally they have the costliest and अच्छा brand होंगे, the costliest brands, सबसे महंगा, इससे आगे कुछ नहीं है, इससे सबसे महंगा होगा इटालियन कलेक्शन. ये जो भी है यूएस से भी आता है, बड़ा बड़ा ब्रांड, रिटेल ब्रांड्स है काफ़ी बड़े बड़े, वॉलमार्ट का, ये सब कॉस्टलियस्ट होता है. सो अगेन आई एम जस्ट अपीलिंग, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड भी करें. एंड ऑनलाइन क्लास में जो ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन डू इट एट एनी टाइम, इसमें कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप में. आई एम अवेलेबल. इवनिंग क्लासेस होता है 6 to 9, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 3 batches are there always. You can join the classes. The classes will be more than 2 months, every day 1 hour. And in the bigger malls we get the costliest things. जो 5-star malls होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पे कॉस्टलियर द कॉस्टलिएस्ट ब्रांड्स होता है, फॉरेन ब्रांड्स होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड्स नेचुरली कॉस्टलिएस्ट होगा ही होगा. So that's all for today. Take care. I'll come with a new video tomorrow. Thank you.